ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी की क्या होता है, एंड देन आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फॉरेन की. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस ईआरडी डायग्राम, और जब हम फॉरेन की पे आएंगे वी विल रिविजिट फॉरेन की. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड कि प्राइमरी की क्या है, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू एन आंसर देयर. सो लेट्स गो बैक टू MySQL. Now you got the idea कि app ID is will uniquely identify each application in application table or application entity. So that's why app ID should remain as primary key. अगर बात तुम्हारे लिए अगर by default ये अगर primary key नहीं बनाता है उसको, so make sure you click on this PK. Now what is PK? PK belongs to primary key. So you'll have to click this. अगर ये column तुमको primary key बनाना है तो PK को तुमको टिक करना पड़ेगा. Next is not null. Now what is not null? हर एक एप्लीकेशन का एक आईडी होना चाहिए, राइट? तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए जहां पे उसका एक आईडी ना हो. तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन नॉट नल. नॉट नल मतलब नल नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए. सो मेक श्योर यू कॉल इट एज नॉट नल. उसको भी क्लिक करना पड़ेगा. देन द नेक्स्ट थिंग इज यूनिक इंडेक्स. तो इसको भी क्लिक करना. व्हाट इज यूनिक इंडेक्स? Like every application should have their own unique application ID. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एप्लीकेशन का सेम आईडी है. लाइक राज मिश्रा का हमने एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन यूनिक. नाउ बाइनरी इग्नोर इट, डोंट वरी अबाउट बाइनरी. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट, तुम गूगल कर सकते हो या चैट जीपीटी पे पूछ सकते हो कि भाई बाइनरी क्या होता है, बट लेट्स इग्नोर दिस वन नाउ. नाउ व्हाट इज अनसाइंड डेटा टाइप? अनसाइंड डेटा टाइप अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपके वैल्यूज माइनस में नहीं आएगा वो. और बाय द वे, ये जो प्राइमरी की है ना, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्रिएट करेगा MySQL तुम्हारे हर एप्लीकेशन के लिए. तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा भाई इसका एप्लीकेशन आईडी का ये आईडी होना चाहिए. वो MySQL ऑटोमेटिकली कर देगा एंड वी विल सी इट. तो वी डोंट वांट MySQL to define any primary key in negatives. -1 करके -2 करके क्या मतलब बनता है? सो दैट्स वाई वी वांटेड टू टेल इट कि भाई नहीं, एक काम कर, अनसाइंड रहने दे, जस्ट गिव मी ऑल द पॉजिटिव्स. अनसाइंड बेसिकली अगर अनसाइंड अनक्लिक करोगे, अनचेक रहेगा तो वो माइनस भी दे सकता है. Alright, and we'll see this in detail when we look at data types in one of the next video. ठीक है? So for now, just bear with me. Okay, what is ZF? ZF basically means कि अगर कोई zero, fill up values for the column with zero if it is numeric. So we'll not worry about it. It's okay. We don't want any applications to be with primary ID is zero. So forget about it. AI. Now this is auto incremental. What is auto incremental? कल अगर कोई नया एप्लीकेशन आता है और इस टेबल में तुम स्टोर करते हो तो उसका आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. ऑटोमेटिकली प्राइमरी आईडी क्रिएट हो जाएगा नया वाला. दैट्स व्हाट आई मेंट. सो विल से एआई और ऑटो इंक्रीमेंट एज यस. जी, या जी बेसिकली मीन्स कि भाई तुम्हें प्राइमरी की ना बना सकते हो खुद से भी. सो विल नॉट वरी अबाउट इट. वी विल लेट MySQL क्रिएट प्राइमरी की फॉर अस फॉर एप्लीकेशन टेबल. ओके, now let's go back to our model. Okay, and let's see what's next we want. The next thing we want is date tagged. So I'm going to say date tagged. Okay, now date tagged, data type, just bear with me. Data type पे हम आते हैं possibly next video में. So I'm going to say this as date time. You will see date time somewhere. Yep. Okay. And then okay, now is date tagged your primary key? No, है ना. डेट, हर एप्लीकेशन का एक डेट होगा और उसका टाइम होगा, तो दैट इज नॉट अ प्राइमरी की. प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हमने, तो वी विल से ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्राइमरी की. इसको अनचेक करना है. नॉट नल, यस, हमें नल नहीं चाहिए. हमें हर एक एप्लीकेशन के लिए डेट होना, डेट और टाइम होना ज़रूरी है. सो विल से नॉट नल. यूनिक नॉट नेसेसरी. यूनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक ही टाइम पे दो एप्लीकेशन भी तो अलग अलग स्टोर सबमिट कर सकता है, तो दो एप्लीकेशन का सेम डेट और सेम टाइम हो सकता है, तो यूनिक रखने की ज़रूरत नहीं है. इसको भी रखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. ऑटो इंक्रीमेंटल भी रखने की ज़रूरत नहीं है. फॉरगेट अबाउट दिस बिकॉज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन विल बी डिफाइंड
कि on the time when the application is submitted in the system. So forget all about that. सिर्फ not null को uncheck को check रहना चाहिए. Next is date action. So date action basically means the same thing. Say that. I'm going to say date time. Okay, and then again not null पे click करूँगा. All right, let's keep moving. Next is analyst ID. Analyst ID हम अभी नहीं बना. Yeah, I think we should create analyst ID. Yeah, let's not create analyst ID. I'll tell you why. ये analyst ID, outcome ID, Q ID हम फिलहाल नहीं बनाएंगे. We will create in the next video जब हम foreign key के बारे में बात करेंगे. Alright, so ये वाला कॉलम में delete मार देता हूँ. I'll say delete selected. So now we have an application table with three. In fact, और एक बचा है. अगर आप पहले प्रोजेक्ट में देखोगे तो we need one more column called message, right? So we'll say message. Alright, and message would be varchar, I think 255. Yeah, 255 is good. एंड देन मैसेज क्या होता है ना कि जब भी एप्लीकेशन अगर कोई डिक्लाइन कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है तो आइडियली उस पर मैसेज डालना होता है कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों डिक्लाइन कर रहा हूँ. तो वी विल हैव अ कॉलम फॉर दैट मैसेज. एंड देन मैं इसको वारकार 255 क्यों कर रहा हूँ, विल सी, डोंट वरी अबाउट दैट. और इसको मैं प्राइमरी की भी नहीं कर रहा हूँ, नॉट नल भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लीव एवरीथिंग एज ब्लैंक. वाई? क्योंकि अभी अप्रूव अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको मैसेज डालने की क्या ज़रूरत है, तो आई जस्ट लीव इट ब्लैंक. तो इस मैसेज कॉलम में नल वैल्यूज़ भी आ सकते हैं. तो ये एक्स्ट्रा जो बना देता है ना, ये एक्स्ट्रा कॉलम, उसको मैं डिलीट करता हूँ. सो नाउ वी हैव ऐप आई डी, डेट टैग, डेट एक्शन एंड मैसेज. नाउ लेट्स क्रिएट आवर सेकेंड टेबल. सो आई विल क्लिक ऑन दिस टेबल अगेन, आई विल क्लिक ऑन this box here again and double click on this, and let's call this as analyst ही है ना? Yep, analyst. I hope I have spelled it correctly. Okay. Analyst में हमको क्या चाहिए सबसे पहले? We need analyst ID. Again, what is analyst ID? Analyst ID will be a primary key which will be unique to all analysts, right? जैसे हमने यहाँ पे देखा आर मिश्रा, डी क्रूज, whatever. So we'll say again this is primary key, not null, not null नहीं होना चाहिए. Every analyst should have an ID. Unique होना चाहिए definitely. And then unsigned ज़रूरत नहीं, क्योंकि unsigned मोस्टली numbers के लिए होता है, तो यहाँ पे तो numbers नहीं है. So let me change this to varchar. And don't worry, we will come to this later. Okay. ये वारकार क्या होता है, डेट टाइम क्या होता है, वी विल लुक इनटू दिस इन डिटेल, बट फॉर नाउ जस्ट बेयर विथ मी. तो ये अनसाइंड मोस्टली नंबर्स में होता है, सो विल नॉट वरी अबाउट इट. तो हमारा टेक्स्ट होगा ना, इसमें नंबर्स नहीं है, राइट? टेक्स्ट है, सो विल फॉरगेट अबाउट इट. ऑटो इंक्रीमेंट नहीं, हमको इसको ऑटोमेटिकली नहीं डिफाइन करना है. डेटा में जो हम डिफाइन करेंगे कि आईडी क्या होना चाहिए हर एनालिस्ट का. सो ऑटो इंक्रीमेंट ज़रूरत नहीं है और जी भी ज़रूरत नहीं है, forget about it. Next we need first name. So let's quickly call it as first name. Varchar will call it as 25, and then forget about the rest of the things, क्योंकि जैसे मैं बोला कि दो आदमी का एक नाम और लास्ट नेम सेम हो सकता है, राइट? सो वी विल नॉट वरी अबाउट नॉट नल और प्राइमरी के तो है नहीं, एंड सो forget about all that, leave it by default unchecked. Second thing is we need is last name. Again, we'll leave it as varchar 25, and then city ID, country ID, we will not worry about it because these are foreign keys, and we'll tell you what foreign keys are. All right, now, so we have created two tables. Let's create one more called city. I think I'm having fun. So I'm going to create one more, and I will call it as city. City, as you might have guessed, the first thing you need is city ID, and it will be integer, primary key, not null, unique. Every city should have their own identity, and then you will have auto increment. जैसे अगर डेटा में नया city आए तो ऑटोमेटिकली उसको एक
आईडी क्रिएट हो जाए. यूनिक नल इज़ फाइन बिकॉज इंडिज नंबर्स होंगे इसमें, राइट. जैसे कि अगर आप टेबल में जाओगे सो यू विल हैव सी 1 2 3, सो नंबर्स है, सो वी डोंट वांट माइनस, वी डोंट वांट नेगेटिव नंबर्स, सो विल से unsigned. Okay, next thing we need is city name. Fair enough, so let's call it as a city name. We'll call it varchar 45. Fair enough, इसको छोड़ देते हैं सब blank. Next is country ID. Now you see country ID is connected to this table called country, so we'll not worry about creating this. हम सिर्फ primary key बना रहे हैं और बाकी के fields बना रहे हैं, हम foreign key नहीं बना रहे अभी. Let's create one more before we take a pause. Alright, so let's click on this here again, and we'll call it as country. Let's name it as country, and we call it as country ID integer. See, automatically ले लेता है वो, क्योंकि उसको पता है कि पहला कॉलम बाय डिफॉल्ट हम प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं, सो वो ऑटोमेटिकली उसको ये जो येलो साइन है ना, वो चाबी का साइन है, इट्स अ प्राइमरी की. सो प्राइमरी की नॉट नल, वी नीड यूनिक, वी नीड ऑटो इंक्रीमेंट. नया कंट्री आया तो वी नीड an ID for that country. Next is we need country name. Country name varchar 45, that's fine. Alright, और Control S दबाने भूलना नहीं, so that ये मॉडल सेव हो जाए. Let's see, we'll create I think एक स्टोर ID मिस हो गया है, so remember that हम एक और एक क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम होगा स्टोर ID. So let me do that. I'll click on this and I'll call it as store ID. Store ID. Sorry, not, why am I saying store ID? टेबल का नाम तो स्टोर होगा, राइट. स्टोर, लेट्स मी रिफर टू द स्टोरी है ना वो. इनफैक्ट मैं पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि मैंने कैसे क्रिएट किया था, क्या नाम दिया था उसको पहले. स्टोर, ठीक है. सो वेयर इज, यस, स्टोर, एंड द फर्स्ट कॉलम वी नीड इज स्टोर ID. Again, integer, primary key, unique, unsigned, and auto increment. And with the next thing we need is store name, which will be a varchar 45. Okay, I think we are good with this. Next video में we'll start talking about foreign key, and we'll start adding those relationships. Okay, रिलेशनशिप ऐड करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की. हमने प्राइमरी की तो क्रिएट कर लिया. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट क्रिएटिंग फॉरेन कीज. ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.